What is a ratio? A ratio is basically a comparison between two quantities. Okay, it's a comparison between two quantities. Two quantities. So how to solve a ratio? There are few steps to solve a ratio. Step number one. Step number one is to take the sum of the ratio. Okay, take sum of ratios. Step two, divide that sum of ratio over the terms. Okay, divide sum of ratio on each ratio. Step number three, multiply each ratio with or not. I'm gonna give a demo to you as well. I'm gonna explain it to you. Look, let's see. I told you the three rules. Rule number one. First, we are gonna take the sum of the ratios. These are the two ratios. It says that Ralph and Susie share $57 in the ratio this. Calculate the amount Ralph receives. Okay, so that is the total amount. Okay, total amount, and this one is the ratio. So what are we gonna do? We are gonna take sum of ratios first. According to step number one, sum of ratios, it will be 2 plus 1, 3. So sum of ratio is 3. Now I'm gonna write the ratios. Ralph, colon, Susie. It is 2 ratio 1. Step number 2, divide sum of ratios on each ratio. So I'm gonna divide sum of ratios over here and here as well. Step number 3, multiply each ratio with the total amount, $57. So here same way, $57. So now it says that calculate the Ralph amount. Okay, so that is the Ralph share. So I will try to calculate it. Now use calculator, Fatma. If it is not of 2 marks, it is not in, it doesn't come in P1, then you can do manually. Okay, like if it comes in P1, you have to do manually. If it is in P2, then you have to use calculator. Okay, so it is 1957 divided by 3. 3 ones are, 3 ones are, and 19s are. 19s times 2. Ralph share is 19 times 2, which is 38. Okay, so that is $38 is Ralph's share. Did you understand it? Yes, miss. Okay. Now Ralph gives $2 to Susie. Calculate the new ratio Ralph money and Susie's money. Okay, let's see what is the Susie money. We got that this was the Susie's money. Okay. So I'm gonna figure it out. Okay. It was 3 19s or 19s times 1. Okay. So it was 19 over here. Like this whole share was 19. Yes, Is miss. it, Fatma? Now it says that Ralph give $2 to Susie. So Ralph is having 19 minus 2 because he has given $2 to Susie. So 19 minus 2 is 17. And Susie will be having, Ralph is having 38. We have calculated Ralph's share, which is here. It is Yes, 38. miss. So 38 minus 2. Okay. And Susie will be having 19 plus 2. Is it? So 38 minus 2 is 36 and 19 plus 2 is 21. Is it, Fatma? Yes, miss. Okay, let's simplify it now. By simplifying it, 1 minute, let me make some space. I'm going to simplify over here. So 3, let's divide it with 3. 36 and 21. They both are divisible with the table of 3. Divide both sides with 3. 3 ones are, 3 ones are, 3 twos are. 3 ones are, 3 sevens are. So the ratio is 12 ratio 7. That is their new share. Is it clear, Fatma? Yes, miss. We will try to simplify as maximum as possible. Okay. Further, it is not going to simplify. So we will leave it over here, and that will be our share. Okay. Let's move to next question. Next question says that Pip and Ali shares 587 in the ratio. Okay, they have mentioned the ratio as well. In the ratio this, work out the Pip's share.
we are going to follow three rules. Okay. So step number one. What was the step number Can I one? take it? We are So, going to take the sum of the ratios. Yes. Sum of ratios, it will be 5. Now, second was, I'm going to write it over here, 4:1, because this is Pep, this is Ali. Each ratio will be divisible with the sum of ratio and multiply it with total amount. Multiply with the total amount, which is 785. It says a pip share. That is the pip share. Okay, let's simplify it. So 785 divided by 5, it is 157 times 4 pips 628. share. Okay, 157 times 4, which will be 628. So 628 is the pips share. Is it clear, Fatma? Let's do this one. It says that Pedro and Eva do their homework. Pedro takes 84 minutes to do his homework. The ratio Pedro's time and Eva's time is this. Okay. Work out the number of minutes Eva takes to do her homework. All right. We are going to follow the same steps. Okay. To solve a ratio, we have to follow the same steps. Step number one. We are going to take sum of 13. 7 plus 6 is 13. Now Pedro's and ratio Eva. So ratio is 7, ratio 6. Second step is divide it with the sum of ratio. I have divided it now. Times it with total. So here 84 minutes are the total minutes. Okay. Total amount 84 and times 84. Now it says that work out the number of simplify it. 84 divided by 13 times 6. So Eva has taken 38.76 minutes. Okay, or we can write it at 38.8 minutes. Is Yes, it clear, miss. Fatma? Okay. If he would have mentioned like convert this into second as well, then what are we gonna do? It with 60, then it will be converted into seconds. Then it will become as 38 minutes. We are going to convert it. Okay. If he would have said that convert this into minutes and seconds, minutes and seconds. Okay. So how to convert into minutes and second? You have to take the decimal part separately. Okay. That is the decimal converted into seconds because 1 minute and it will become zero point 0.8 times 60. It will be 48 seconds. So Eva has taken 38 minutes. If he would say that convert this into second as well, then you would be required to do this like that. Is it clear, Fatma? Yes, miss. All right. Okay. It says now a journey of 170 kilogram took 4 and 1 by 4 hours. Calculate the average speed in kilometer per hour. Potatoes cost 75 cents per kilogram. John paid $1.20 for a bag of potatoes. How many kilograms did he buy? Okay, let's do that. It says now a journey of, first let's do A part. A journey of 170 kilograms took 4 and 1 by 4 hours. Average speed in kilometer per hour. Okay. So what is the formula of average speed? A part. Total Average distance over total. speed. Exactly. Total distance over total time. That is the average speed. So what are we going to do now? We can see that total distance is 170 kilometer and total time is 4 and 1 by 4. Let's convert this 4 and 1 by 4. We are going to convert 4.7. this compound form. Okay. This is mixed fraction or compound form. We are going to convert this into normal fraction. Okay. Normal fraction or decimal part. 4 4 the 16. 16 and 1 is 17. 17 divided by 4. Okay. I'm going to convert this into decimal. 17 divided by 4 is 4.25. So 4.25 hours. And that is in kilometer. So 170 divided by answer is 40. So every Fatma, Yes, miss. our first answer is 40 kilometer per hour. Now it says that the potato costs 75 cents per kg. John paid $1.20 for a bag of potatoes. How many kilogram did he buy? Okay. We are going to use unit method for that. Okay. You can use your own unit method as sometimes I use different method to solve it. Like the unit method I use differently. Okay. So you can use your own way. Try to understand it. So the thing which we are going to figure it out, we have to put this, okay, the thing which we have to find out, we are going to put this on the right side, okay? So it says that we are, I'm going to convert, look, here these are cents and these are dollars, okay? First, we are going to make them same.
Either I'm going to convert this dollar into cents or I'm going to convert this cent into dollar. Okay, the thing which is easier for you, you know that $1 is equal to 100 cents. Okay, isn't it, Yes, Fatma? miss. So I'm going to convert dollar into cents. Okay, so 1.20 times 100 dollar, 1.20 is equal to 1.20 times 100, it will be cents, and it is 120 cents. Clear? Now, I'm gonna use my unit method. 75 cents gives, like potatoes are, if we pay 75 cents, then we are going, how many kgs are we gonna get? 1 over 75 kgs. Now multiply it on both sides. So 120 over 75 kgs. So you can simply divide it. It will be 120 divided by 75. It is 1.6. So we will be getting 1.6 kgs. Fatma, did you understand it or not? You can use your own unit method. I think you use like 75 ratio 1, and here it will be x, then it will be 120. Like that, Fatma, you do? Yes, miss. Cross multiply, isn't it? Yes, miss. Okay, you can use your own method. देखो, हमारे पास बेसिकली ये क्वांटिटी होगी 3 times 10 raised to power plus 4 times 10 raised to power plus 2 times 10 raised to power plus 0 times 10 raised to power. ठीक है, अब देखो फातिमा, बेसिकली आपके पास है 3 टाइम्स 10। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, 10th की पावर में। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी, यानी यूनिट 10, 100, 1000, ऐसा ही है ना। अब देखो, जब ये यूनिट है तो यूनिट में 10 की पावर क्या होती है? 10 की पावर यूनिट में 0 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है, ठीक है, यूनिट में 10 की पावर 0, फिर आगे 10 आ गया, 10 में इस 10 की पावर 1 होगी, फिर उसके बाद आ जाता है 100, 100 में 10 की पावर 2 होती है, और फिर आ जाता है 1000, 1000 में 10 की पावर 3 है। देखो, ये था 3002, ऐसा नहीं है फातिमा? Yes, miss. ठीक है, तो हमने इनका वो ऑर्डर देखना है। अब यहां से देखते हैं। अब देखो, अब ये किस पोजीशन पे मौजूद है, इसको 10th कहते हैं और 100th। ठीक है, लाइक 10th एंड 100th, टी एच आता है इनके साथ। ठीक है, इसका मतलब होता है इस पे मतलब डिविजिबल साइन है, लाइक 10 रेज टू पावर 1 बाय 10 रेज टू पावर माइनस प्लस 100 है। ठीक है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। पार्ट, दिस इज ए पार्ट। अगेन एक्सचेंज रेट इज $1 is equal to 66 yen. So I have to convert $200. I told you before that the thing which we are going to convert, exchange or change according to currency, we need to make it one. So it is already one over here. So simply I'm going to multiply it with 200 on both sides. It will be, use your own method. 1300, 200. Sorry. 200. Okay. 13,200. So it is 13,200 yen. Okay. Now it says that calculate in dollars the amount received for 33,000 yen. Okay. We need to convert this into dollar. The exchange rate is still same. Okay. So what am I going to do? I'm going to use my own method, but you can use your own unit method. So I'm having exchange rate is 66 yen equals to $1. Let's make it one first. 166. So multiply it on both sides with 33,000 and it will be 6. It is $500. 500. Yes. So $500 is our answer. Is it clear, Fatma? Yes, miss. Let's solve it now. ठीक है, ये है आपके गॉज के पॉइंटर। अब देखो, आप अक्सर जब गाड़ी में आप जा रही होती हो तो आपका ड्राइवर आपको बताता है कि भाई आपके पास फ्यूल जो है वो इतना एम्प्टी है। ठीक है, लाइक अब देखो ना, ये मोर देन हाफ आपके पास फ्यूल है ना, हाफ तो ये हो गया, Yes, miss. ये आपका ये हाफ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका टैंक बिल्कुल फुल होता है। ठीक है, अब इसका मतलब है अभी आपके पास मोर देन हाफ ये पोर्शन आपका फ्यूल का प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने क्या बताना है? अब देखो, इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं इसको बताने की। ठीक है, अब वो चॉइसेस क्या क्या है, या तो आप ये बताओगी कि आपका फ्यूल जो था वो कितना फुल्ड था, और या आप ये बताओगे कि आपका फ्यूल कितना एम्प्टी है। ठीक है, टैंक जो है वो कितना फिल्ड है। ठीक है, ये Yes, सारा miss. आप दोगी। ठीक है, एक चॉइस तो ये हो गई, फील्ड है। या दूसरी चॉइस ये होगी कि आप बता देते हो कि ये कितना, आपको जो कंफर्टेबल लगेगी आप उसको चूज कर सकती हो, और मैं उसकी आपको हेल्प भी करूंगी। ठीक है, अब देखो, आपका फ्यूल बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है,
सबसे पहले हमने एक स्केल बनाना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपका जो स्टार्ट होता है ना एम्प्टी होना फ्यूल, वो ये आपका 0 है। 0 से फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वार्टर हो जाता है, फोर्थ क्वार्टर। अच्छा, अब देखो आप कहती हो मैंने क्वार्टर की फॉर्म में कहा, जबकि यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो ये कैसे, क्वार्टर मींस 1/4, ठीक है। एक सर्कल है, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर, ऐसा ही है ना। ये 1/4 पार्ट होता है उसका, ये भी 1/4 पार्ट हो गया, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 होता है, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड जिस तरीके से लेती हो, बेस सेम है, आपने जो नोमिनेटर है वो ऐड कर देना है, 1 + 1 2 हो जाएंगे। अब देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 1 2 2 yes, तो 1/2। अब देखो इसका मतलब है आपका जो सेकंड क्वार्टर है ना, यानी फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर आता है, सेकंड क्वार्टर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने थर्ड क्वार्टर की वैल्यू बाय 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब इनको सबको ऐड अप करो और नोमिनेटर को ऐड अप कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है। अब लेट्स से कि मैंने फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू निकालनी, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको 4 टाइम्स 4 प्लस 1/4, 1 + 1 + 1 + 1, ये क्या बन गया 4। मुझे बताओ फातिमा, ये बात समझ आई है? इसीलिए देखो जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें फुल आ रहा है, लाइक वो 1 है, ठीक है, 0 to 1, ये आपके क्वार्टर्स है। फातिमा ये बात समझ आई है आपको? yes, miss. अब मेरे ख्याल से आपको काफी क्लियर हो गया होगा। Yes, miss. अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? अब मेरे पास उसने एक पॉइंटर शो किया हुआ है, ठीक है। उस पॉइंटर के अकॉर्डिंग अब वो मुझसे ये डिमांड कर रहा है कि मैं जो पोर्शन गिवन है मुझे उसको शो करना, व्हाट फ्रैक्शन डज द गॉज शो। अब हमने बताना है कि गॉज हमें क्या फ्रैक्शन शो कर रहा है। अब हम इसको टू वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो मैं बताऊं कि वो कितना एम्प्टी है, और या मैं ये बता दूं कि मेरा जो टैंक है वो कितना फिल्ड है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ फातिमा, आप किस वे से एक्सप्रेस करना चाहोगी? कितना कितना empty है? कितना एम्प्टी है, ओके। अब हमने इसकी परसेंटेज बतानी है, फ्रैक्शन फॉर एम्प्टी। 1 मिनट, फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन ऑफ एम्प्टी गॉज को बताने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ये मेरा फर्स्ट क्वार्टर है। अब इसके लिए एक स्केल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक स्केल बनाऊंगी। स्केल मैंने जो जैसे हम पोर्शंस, ये 4 पार्ट्स हो ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो तो ये 1/4 बनाते हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स और 4 पोर्शंस आर इक्वल्स टू 1/4, ऐसा ही है। करूंगी तो 1 पोर्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 दूसरी डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/60 ठीक है। अब देखो फातिमा, मुझे ग्राफ के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि इसने कवर किए हैं 1 2 3 4 5 6 पोर्शन, ठीक है। ये 6 पोर्शन एम्प्टी है, बाकी ये सारा फिल्ड है, ऐसा ही है। तो 6 पोर्शन एम्प्टी है, ठीक है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस है, या तो मैं 6 पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दूं 1/14 से, ठीक है। मेरी बात समझ आई फातिमा? 6 Yes, पोर्शन को miss. मल्टीप्लाई तो मैं 1/16 से, और यहाँ पे मुझे पता है कि ये 4 पोर्शन की वैल्यू मेरे पास 1/4 है, तो मैं बाकी इन 2 पोर्शन की वैल्यू को ऐड अप करूँ, ठीक है। मैं दोनों वेज से बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया है, या तो मैं 16 पोर्शन, क्योंकि मेरे पास 16 वो थे 6 पोर्शन थे, ठीक है। एम्प्टी एम्प्टी टाइम्स 16, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ, देखती हूँ मेरे पास क्या फ्रैक्शन बनता है। ये है 2 3 आर 8 पार्ट उसका एम्प्टी है, बाकी सारा फिल्ड है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं अल्टरनेटिवली कैसे एक्सप्लेन करूँ, देखो इसको मैं ये करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया था, उसने मुझे 4 पोर्शंस की ऑलरेडी सम अप करके वैल्यू दी हुई है, 1 2 3 4, 4 पोर्शन है 1/4, ठीक है। तो मैं अल्टरनेटिवली क्या करूंगी, 1/4 कर दूंगी 2 पोर्शंस की वैल्यू, देखो ना आगे 2 पोर्शन है ना, 1 एंड 2, तो मैं इन 2 पोर्शंस की वैल्यू को ऐड कर दूंगी 1/3। नाउ सिंपली आई नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि ये मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है। और नोमिनेटर में भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये किया Yes, था 4 + 1 + 1, और ये कितना बन जाएगा 5 एंड 6, 6/6 8 आर। तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर दोनों मेथड से सेम आया है। इट सेज दैट अहमद बतुक एंड चांद शेयर्स $1000 इन द रेशियो, ओके। फर्स्ट स्टेप क्या है रेशियोज को सॉल्व करने का, स्टेप 1, tama ka. सम ऑफ द रेशियोज, 8 + 7 + 5, so what will be the answer? 20. 20, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज, पहले मैं इनका जरा रेशियोज बना लूं। अहमद का ए मैं लिखूंगी, बतुक बी एंड चांद सी, ओके। एंड रेशियोज आर 8 रेशियो 7 रेशियो 5, डिवाइड सम ऑफ रेशियोज ओवर द रेशियोज, एंड थर्ड स्टेप इज मल्टीप्लाई इट विद टोटल अमाउंट, ऐसा ही है ना फातिमा, मल्टीप्लाई इट विद टोटल अमाउंट। So simplify it, it's gonna be 200s are 5 0, it's gonna be same 50, same
Now it says that Ahmed का share क्या है? Ahmed का share 50 times 8. Fatma, do that. 50 times 8 is 400. 400. $400. And 50 times 7 is for buttocks, $350. And 5 times 50 is $50. That is the share for that. Let's do it. Ahmed and Babar shares 240 grams of sweets in the ratio. Calculate the amount Ahmed received. It's also same. Step number one, Miss. sum of ratios is 7 plus 10. 3 is over the ratio. Sum of ratio over the ratio. Ahmed and Babar, it is 7 ratio 3. So divide it with 10 on both. So I'm going to multiply it with 240. 168 and And you, 772. okay, so it's gonna be, it says that Ahmed's share. That is Ahmed's share. We are just gonna figure it out. So 24 times 7, it is 168 gram. So that is the amount which he has received. Is it clear, Fatma? All right. An empty tin has a mass of 330 gram. When filled with powder, the total mass in kilogram of the powder. Okay. Okay, Fatma. An empty tin has a mass of 330 gram. When filled with powder, the total mass is 210. Okay, find the mass in kilogram of the powder. All right. You can see that there is a tin and total mass. You have filled it with powder as well. Okay. So you are going to assume that the mass of powder is X. So the total mass is 2.10 kg. Okay. Now let's find the value of X. Okay. In kilogram. So what am I going to do? I'm going to convert this into kilogram as well because I have to figure out my answer in kg. So it's better to convert this right now in kilogram. So Fatmi, what is the way to convert this in kilogram? I told you the conversion Then rate some multiply from quickly. kilogram. Divide with We are going to multiply with, and from gram to kilogram, we will be yes, dividing miss. it with 1000. Okay. So let's divide it with 1000. It's going to be 330 divided by 1000. 0 g. Clear? Now I'm going to write it. So it says that mass of tin, which is 0.33 kg, 0 kg. Let's separate x. To separate x, we have to take this on the other side, minus 0.33 kg. So Padma, subtract it and see what will be the answer. 1.77. 1.77 kg. So the mass of powder is 1.77 kg. That is the mass of powder. Now Fatma, it says that जो हमने अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था. B part देखो जरा. Yes, miss. B part says that express 2.45 hours in minutes. अच्छा, अब उसने सेपरेटली नहीं कहा, उसने कहा ऑल ओवरऑल को आप मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, टाइम 60 आप सिंपली कर दो, ठीक है, फर्दर अगर वो मिनट्स एंड सेकंड्स कहता तो फिर हमने इसको इसके फ्रैक्शनल पार्ट को जो डेसिमल पार्ट है इसको सेपरेट लेना, ठीक है, अब सिंपली 2.45 को टाइम्स कर दो 60 के एंड यू विल बी गेटिंग 147 मिनट्स, Yes, 147 मिनट 7 एंड दैट इज 147. क्लियर हो गया फातिमा? yes, miss. ऑलराइट, दिस इज आल्सो एक्सचेंज रेट. The rate of exchange between pound and dollar was this. Calculate the number of dollars received in exchange of this. All right. Okay, Fatma, this is our exchange rate. Okay. So we have to convert first pound into dollars. I am going to use the same method which I used to follow. Okay. It is already one, the thing which is given. Okay. The unit in which my quantity is given, I have to make it one, but it is already one, so I don't need to do anything else. Okay, I will simply multiply on the both sides with 120. Pound 1 times 120 equals to $20. So it will be 336. $336. Clear, Fatma? Now the number of pounds Yes, miss. received in exchange of $224. My exchange rate is same. 1 pound is equal to dollar 2.80. 0.80, it will Yes, be miss. $1 because the quantity which is given, I have to make it one. Okay. To make it one, I need to take this on the other side. It is multiplied over here. On the other side, it will be divisible. Okay. Now simply Yes, miss. multiply both sides with 224 divided by 2.80, which is 80 euros.
Is your answer correct, Yes, Fatma? miss. Okay. Three numbers are given in the space. Write L against the large, M against the next large, and S against the smallest number. Okay. Let's write it, Fatma. 0.7 million. First, let's see what will be the value of 0.7 million. What is meant by million? Million means that 10 raised to power 6 times 10 raised to power 6. Yes, miss. Isn't it, Fatma? 1 million is having 6 zeros because it is 10 lakh. 1 lakh is having 5 zeros and 10 lakh is having 6 zeros. 6 zeros, so it is 0.7 times 10 raised to power 6. Now let's see that what will be the value. 6.87 times 10 raised to power 5. Okay, if I will simplify this into you can say that in standard form, then it's gonna be 7. Fatma, I'm gonna simplify it in above space because I'm having less space over here. So Fatma, you can see that if my point is going to move in this direction from right to left, Fatma, from right to left, if a point moves from right to left, then a positive comes in the power of 10. Or if point move from left to right, then point, so what will be the power of 10? It will be minus 10 raised to power minus 1 because it has moved one step, okay? And times 10 raised to power 6 minus 1 is 5. And 804,000. 804,000. You are going to write it. So Fatma, how can you write it? 104,000. Yes, ठीक है, miss. अब देखो ये 1000 आ जाएगा, 40 पे आ जाएगा, ये 100 पार्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम Yes, इसको अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो yes. जाएगा 10 रेज टू पावर 5। अब देखो इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है और Hmm. स्मॉलेस्ट कौन सा है। उसने कहा लार्जेस्ट के अगेंस्ट Last एल वाला आर, largest है. 8 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 5, 8 वन में जो होगा वही लार्जेस्ट होगा, Largest ठीक है. है। और मिडल जो होगा नेक्स्ट लार्जेस्ट, मिडल क्या होगा एल वाला, ये वाला मिलियन वाला 7 Yes, मिलियन, 7 times 10 raised to power 5, और स्मॉलेस्ट क्या होगा 6.8, ठीक है, दैट विल बी स्मॉलेस्ट। अब समझ आई फातिमा? yes, miss. अच्छा, अब उसने कहा एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 1:4। अच्छा, अब हमने स्मॉलेस्ट पार्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द होल नंबर, ओके फातिमा, ये भी रेशियो का भी और इसमें परसेंटेज भी शामिल है, ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस। फर्स्ट स्टेप क्या है, सम ऑफ रेशियोज। तो सम ऑफ रेशियो इज 1 + 4, ठीक है, इट विल बी 5। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द रेशियोज, सिंपली डिवाइडेड विद सम ऑफ रेशियो एंड मल्टीप्लाई इट एन अमाउंट, ठीक है, उसने कहा एन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो हियर अमाउंट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, तो हम उसको एक्स मेंशन करेंगे, एक्स। क्लियर हो गया? An amount of money is divided into two parts in the ratio. Find the smallest part as a percentage of the whole amount. ठीक है? अब देखो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये है मेरे पास बन रही है 4/5 एंड 4x/, ठीक है, क्योंकि ये तो 4 Yes, टाइम्स miss. मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। देखो ना, ये पोर्शन 4 टाइम्स आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये बिगर बन जाएगा, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज निकालने के लिए क्या उसने कहा है, परसेंटेज जो होती है वो 100/x इक्वल हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा 100%, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये जो पोर्शन होता है ये डिनोट एक्स टाइम्स 100%, ठीक है, तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जार 5 2% पोर्शन है, दैट इज 20%। ये बात समझ आई? मिस ये x कहाँ से आया जो आपने डिवाइड किया x से? एन अमाउंट, वी हैव अज्यूम दिस अमाउंट एज एक्स, Okay. जो मैंने आपको यहाँ, ठीक है, उसने कहा था होल नंबर, होल अमाउंट पे करेंगे ना, तो यही हमारी अमाउंट थी, एक्स ही थी, टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस पोर्शन को मैंने एक्स पे ही डिवाइड करना था ना, क्योंकि मेरे पास टोटल अमाउंट ही एक्स मैंने अज्यूम की थी, आई डोंट नो दैट अमाउंट, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल चूज किया। Okay.